खाइए क्या? ठीक है।
एसी के नीचे करा था कि वो जगह पे छिप जाए। ठीक है, एक उधर पीछे लगेगा, रुक जाना। यहाँ पे हटा देंगे, यहाँ से हटा के वहाँ इधर एंट्रेंस से ब्लॉक नहीं होगा। इस साइड है उसमें जाम है। ग्रुप डांस खत्म होगा, अभी ग्रुप डांस होगा, उसके बाद चेयर लगेगी, जो जगह बचेगी इसी को हम
पे जाएगा। हाँ एक स्टेज पे लगवा देंगे। अभी जो वो बैठ जाएंगे बाद में लगवा देंगे। बिल्कुल बात है ना। कोने में शरीर की जगह जगह हो तो तक करवा देंगे। हाँ उधर लगवा दें। बैठ जाएंगे सब मिल के। मतलब इसको इधर इधर कर दो बेटा। इधर इधर क्या रहेगा? नहीं अभी मैम एडजस्ट कर रहे हैं। अभी इसको किनारे ही रखेंगे। ये बाद में करें तो ऊपर ले जाएंगे। अभी इसको किनारे करवा देंगे। हाँ हाँ ये सही रहेगा। ये सही रहेगा। डोर के उस तरफ इधर पीछे ले आइए सिस्टर्स, पीछे ले बंद रहता है। ये वाला लीजिए। ये वाला लीजिए। ये वाला पीछे ले ये वाला ले, ये वाला वो स्टेज पे चला जाए, ये स्टेज पे चला जाए। सेम है ना? नहीं सकते वो सेम है तो ये उठा लीजिए उसको। हमारा दिक्कत रहेगा तो दिक्कत सारा प्रोडक्ट तो छिप जाना। नहीं मैम बात नहीं समझ रही। ये अगर यहाँ रखेंगे यदि ये दोनों में से कोई एक वहाँ जाएगा ये हटाना पड़ेगा। अच्छा यहाँ सटाना, इसको कहाँ रखना पड़ेगा? वहीं लेकर बेटा छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ये लेके चलो मैम वो वहीं रहेगा। यहाँ पे टेस्ट कैसे करोगे आप? नहीं सर एक स्टेज पे चला जाएगा, समझ रहा हूँ ये मैं। यहाँ नहीं रहेगा। एक तो पीछे जाएगा ना? हाँ। तो बस ये ले जाना पीछे ना कहीं पे। वाला सही सर दोनों पे ओके प्रोडक्ट इसलिए आप समझ में आई बात। मुझे लगा थोड़ा टेढ़ हो रहा है ना इस वजह से। मैं ये समझा कि दोनों सेम है फिर कोई भी ले सकता है। नहीं नहीं ये स्टेज पे चला जाएगा। बेटा इसको इधर रख करके पहले इसको उधर कर दो। उधर कर दो। अब इसको लेके चले जाओ। कीबोर्ड टेढ़ा मेढ़ा हुआ पीछे दीवार के सपोर्ट कर दो। ठीक है छोड़ दो। सॉरी स्टेज पे एक साइड सर एक साइड उधर जाएगा तो उनका हाईलाइट होगा। वैसे भी जब चेयर्स लगेगा तो फिर छिप जाएगा। इनके जहाँ पे ये लगा था मेरा बच्चा वो तो खुद जैसे यहाँ लगाने नहीं देंगे। तुम्हें में अगर आ जाए सीढ़ी के बगल में तो वहाँ यहाँ पे फिर लगा सकते हैं। यहाँ पे कोई लगाने नहीं दे रहा ना कि सीढ़ी पे ये देखिए सर ये वाला बेस काफ़ी जगह है ना। ये कह रहे हैं कि इनका गेस्ट जाएगा। ठीक है उनका गेस्ट गया तो हम यहाँ लगाएंगे, इनका गेस्ट इतने में तो चला ही जाएगा। जहाँ से भी डिस्प्ले बात कर लीजिए मेरा हाईलाइट क्या हो रहा है वो लेकिन स्टेज पे जाएगा वहाँ नहीं रहेगा। टीएस मिश्रा और इंदिरा गांधी स्कूल ऑफ नर्सिंग के मोनो एक्ट के स्टूडेंट स्टेज पे आ जाइए।
ध्यान रखिए वो मैम का सब सामान पड़ा हुआ है। मैम बोल के जा रहे हैं लैपटॉप वगैरह पड़ा देखो रखा हुआ है पीछे।
10 o'clock लगाया था
क्या या कॉल चल रहा है लाइव? कितने लोग देख रहे हैं? लिंक चेक करना होगा तो हमारे से होगा ना, लाइव शो आ जाएगा। समर्पण वाला जो सब्सक्राइब किया होगा ना यूट्यूब है ना, पार्टिसिपेंट्स को टैग नंबर नहीं मिला। पार्टिसिपेंट्स को टैग उधर जाएंगे, समझ जाना मैम डांसिंग करके इधर से उधर रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर ये
दिखेगा क्या? ये लाइव है बेटा यूट्यूब। इसको थोड़ा साइड कर दो, इधर पर ही है फिर। इतना चलेगा? मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा कर लीजिए। मैं तो एडजस्ट ही करूँगा। ये बड़ी वाली रखो।
लीटर की मतलब 1 लीटर की 6 बोतल में कैंटीन से अरेंज करते हैं बिल्कुल ठंडी जो आपके रहते हैं बैठने वाली उनकी बिल्कुल चिल और 2 कैरेट पानी के लिए पुदमा में ठंडी होने के लिए रखवा दिया है। इससे ज़्यादा अपन ठंडी नहीं कर पाएंगे, मेहनत नहीं कर पाएंगे ज़्यादा ठंडी के लिए। उनको ठंडा चाहिए वो बाहर रख के लेंगे, वाटर कूलर लगा चलो आपको है फ्रिज में जैसे मन जाए और एक तरीका मैंने निकाला था वो भी बता देंगे। वो नहीं करना उसमें 4 से 5 रुपये खर्च हो जाएंगे नहीं कर सकते है ना, कभी तो सिर्फ बात नहीं। जो आपके साथ कौन कौन है ये फ्री बैठा ये कर सकते नहीं हूँ बस तो आप पूरी का आधे घंटे का देंगे तो पर्सन नहीं पर्सन आ जाएगा फिर क्या मुझे क्या करना है प्राइस चला स्लाइड तो मैं भी चला सकता आपको समझा देंगे नहीं नहीं आपकी स्लाइड नहीं चला, आप ही चला। मेरी नहीं है इसलिए हाँ हाँ मतलब मैं नहीं चला, वो अर्पण बेस्ट करेंगे। तो उनको बुला लीजिए, मैं वहाँ चला जाता हूँ उनकी जगह पे। रूम पे होंगे कितनी देर लगेगी इनके साथ सब मैंने फ़ोन कर सकते हैं नहाने जाए तो करीबन हो गया 20-25 मिनट नहाने में यार सभी लोग टाइम फूड को संभाल लेना जो भी है पानी वानी का जो भी है अकेले नहीं, अंडर गाइडेंस में। क्या हुआ सर किसी को फूड के लिए किसी लोगों को मेरा लेवल कोई है नहीं फूड के लिए अच्छी होगी ना पूरी। और सतीश सर भी वहाँ पे काम करा रहे हैं एक्चुअली सर फूड के लिए सिर्फ मैं करने का अगर कोई फ्री है तो आ जाए क्योंकि मुझे बहुत चाहिए वही चीज़ है ना कि अब सडनली फिर वो उनके हिसाब से नहीं चलेगी और मैं बोल के काम हूँ तो आप डायरेक्ट कॉल करिएगा। आपके पास किसी को भेजूँ चलाने वाले ऐसे हम बंदे या तो अपन कैसे क्या वो भी सर्विस है फोन करना है इंडस्ट्री सर्विस वो भी नहीं है ओके आशीष को ले लें सर हाँ सारा काम करते हैं
गई यहाँ पे फाइल आ गई इससे चिप्स बना निकाल हाँ मैं बाउल रखने से मैं बाउल उसमें डाल दूँगी अभी मैंने रखा नहीं है बच्चों को राइस मैंने सेल्स में तो काम हो जाता है स्ट्रेस संजीव सर इसका नंबर और मैं तो लोग भी देखते हैं साथ क्या करना है यार क्या करेंगे अभी सुबह मैं कर रहा था ये अपने आप जब बंद कर रहा हूँ देखा उसकी उसका बैटरी जो है गिरा नहीं ना वो अब से चले जाएगा रिमोट यहीं रखा हुआ अगर लोग छोड़ेंगे तो बच्चे चले जाएंगे प्रेस कर देंगे आराम से अब कहीं ऐसा ना बंद करेगा फंस जाए फिर हमारे पास ऑप्शन है 2 मिनट लगेगा यहाँ पे मैं वॉलंटियर्स बहुत सारे हैं सारे वॉलंटियर्स को बता दूँ सभी को बता दूँ कि जैसे ये खत्म होगा सभी ऊपर आ जाओ 4-5 लड़के हैं वो तो जाएंगे आराम से चलेगा 2 लोग
ऐसे लोगों को कम करो। Good morning. All are requested to please sit in your respective seats so that we can start our program. हेलो तो गेट पे दे दीजिए। हाँ 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 बिल्कुल, हाँ गार्ड साहब को दे दो। आशीष आगे से हटो। बस बस ठीक है। बता दीजिए सर को, बताइए सर सब हैंडल करना है। मैं इसके इस पे आ गया। आप बोल दो इधर से जाकर। तो सामने कर स्टेज नहीं हाँ
सर भूमिका मैम बैठी हाँ वही 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 देख रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल्स को आगे बिठाओ प्रियंका सुनो टीचर्स है ना लोग आगे बिठाओ मैम बस अरे नहीं मैं जाऊँगी मैं देखूँगा आप हर बार में तो ऐसे ही होता है किसका किसका अरे मैम कहाँ वहाँ छुपे बैठी हो हाँ? बैठी आइए आगे
मैडम आप स्टार्ट करो. हाँ आप स्टार्ट करो. Namaste and very good morning to all the respected dignitaries, guests, delegates with a great joy and immense exultation. I feel extremely privileged and honored to be given this opportunity to welcome you all to the State 30th SNAI Biennial Conference organized by the Trained Nurses Association of India, Uttar Pradesh branch. We feel very proud to host this event here at Samarpan Institute of Nursing and Paramedical Sciences. The Student Nurse Association of India is an affiliated association of the student nurses under the umbrella of TNI. SNI was established in 1929 and the first biennial SNI conference was held at Nagpur in 1961. So today is the 30th biennial SNI conference. So throughout the whole journey, the main objectives of the association is to help the students to uphold the dignity of the profession, to encourage students to gain positive attitude towards the nursing profession and also to encourage nursing students to participate and compete in various events at the state, regional and national conference country. So ladies and gentlemen, today we have gathered here not only for official conference but also see the talent, passion and triumphs of each one of the students participating here. As we all know that today we have 15 events for the SNI students, 5 sports outdoor events, that is 100-meter race, 400-meter relay race, discus throw, javelin and badminton. And the rest of 10 is the indoor events, that is poster presentation, on-the-spot painting, floor decoration, extempore speech, mono acting, essay competition, pencil sketching, quiz, personality contest and the dance competitions. So let us pray to God Almighty for the smoothly running of this historical event. And we are very blessed that we have with us Dr. R.S. Dubey, Chairman, Samarpan Nursing Institute, as a guest of honor, Dr. Alok Kumar Srivastava, sir, Secretary and Registrar, UP State Medical Faculty, though he will join with us virtually. Lieutenant Colonel Varun Vajpayee, Executive Registrar, Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Science, sir also will join us virtually. So they all are as a guest of honor of today's event. In spite of their busy schedule, they take a precious time to grace this event, so thank you so much. We also have with us Colonel V. Sugritha Ma'am, Principal, College of Nursing, Command Hospital, Central, Command Lucknow. Mrs. Mary J. Malik Ma'am, President, TNI UP State Branch. Mrs. Bhumika Singh Ma'am, Secretary and SNI Advisor, TNI UP. So now I request our Honorable Guest of Honor, all the dignitaries, Principal Ma'am, kindly come forward for the traditional lamp lighting. So I request the volunteers, please come forward. I request the student representative of the SNI, Madam Srishti Yadav and Madam Sonam Verma, kindly come forward for our traditional lamp lighting. Ma'am, please.
आने दीजिए, आने दीजिए। रेडी, एक मिनट, वेट वेट, फोटो हो रहा है, फोटो हो रहा है, वेट वेट वेट, क्लिकिंग हो जाए फिर आगे, क्लिकिंग हो जाए। Thank you very much for doing this honor. Dignitaries, delegates are requested kindly occupy the respective seats. So once again, to welcome you all, we have a beautiful welcome dance performance from Samarpan Institute of Nursing, BSc second semester students. So it's a pleasure to invite Bhumika, Muskan, Nandini, Shivani, Vanshika to deliver their performance. Thank you for your beautiful dance performance. Now I would like to invite our principal ma'am
Samarpan Institute of Nursing and Paramedical Science, Professor Dr. Dipti Shukla, to deliver the welcome speech for today's conference. I request our honorable guest of honor, Dr. Alice Dubey sir, sir kindly come on and dais and have a respective seat. Volunteer, please escort sir. नीचे आ जाओ भाई हैं? I request Madam Mary J. Malik, President of TNI, ma'am, kindly come on and dais. ये पानी हम दे देंगे ऊपर जिसको पानी ना फूल जड़ी कहाँ से फूल झड़ रहा है ना I also request Mrs. Bhumika Singh, Secretary and SNAI Advisor, TNI UP State Branch, but please kindly come on and dais. वही थी आगे में Now I'd like to call Colonel V. Sugritha ma'am, Principal College of Nursing, Command Hospital, Lucknow. Ma'am, please requested to come on dais. हिमालय हिमालय हुई थी and two I- students I request SNI student, Ms. Srishti Yadav, Secretary SNI UP State Branch UP. Ma'am, kindly come on a dais. the student both the student secretary and vice president you call OET and OET Himalaya. I request Madam Rinku Lakra, OIT middle side दोनों chair from vice president Shop, Delhi Head Office, Business Development Manager, North India. Ma'am, please kindly come on stage. एक दो दूसरी बच्ची आएगी उसको उधर I request Mr. Neil, Brand Manager Himalayan, sir, kindly please come on a dais and have a respective seat. सोनम वर्मा वाइस प्रेसिडेंट सोनम I request Sonam Verma ma'am, student of SNI, Vice President, please come on and tell us. Jai Hind. A very good morning and heartily welcome to respected Sri Alok Kumar Sir, Principal Secretary. He will be online very soon. Dr. Alok Kumar Srivastava, Secretary, UP State Medical Faculty, and Lieutenant Colonel Varun Bajpayee, Executive Registrar, SGPGIMS. These three will be online. Professor Dr. R.S. Dubey Sir, Chairman Samarpan Group. Mrs. Mary J. Malik Madam, President TNI UP State Branch. Mrs. Bhumika Singh, Secretary SNA Advisor, TNI UP State Branch. Colonel V. Sugitra Ma'am, Principal Command Nursing College. Mr. Neil Chancher, Brand Manager and Team Manager Himalayan. Miss Rinku Lakra, OET Delhi Head Office. And their two students, Sonam Verma, Vice President. Miss
Srishti Yadav, Secretary SNAI UP, and all the respected principal of different colleges, faculties, dear delegates, and my faculty and the students. We are thrilled to see you all. Dear respected delegates, it's my pleasure to welcome my cheerful love towards you to be in Samarpan family. Samarpan is recently visual in the picture with his high flight, and I feel proud to share that we secure 97% QCI rating and become a A grade nursing college. Thank you so much. We are also a mental institute among 14 mental institutes. So it is really a charm to share with you. And now we are running all the courses from A&M to Masters, and today we are here with the privilege and pride to host it SNAI 30th SNAI Biennial conference in front of you. So in the same sequence, today I welcome from the Samarpan group to all of you to enjoy today's day and have a great day. Thank you. Now I request Mary ma'am to welcome our guest of honor, Dr. R.S. Dubey sir, with the floral bouquet. To welcome Principal Command Nursing College. I request Ms. Sunanda to welcome President TNI UP branch, Mrs. Mary Malik madam. I request Pragya Singh to welcome Secretary UPTNI branch, Mrs. Bhumika madam. I request Ms. Pooja to welcome Mr. Neil, Himalayan Group. I request Mrs. Priyanka Chaudhary to welcome Miss Renu Lakra madam, OET. Priyanka Chaudhary, yes. I request Mr. Ashish Gupta, student Samarpan, to welcome Miss Srishti Yadav, Secretary SNAI. I request Miss Ankita Yadav, she is there. Miss Ankita Yadav, student Samarpan, to welcome Sonam Verma, Vice President SNAI. Once again, I welcome all of you to the Samarpan family. Thank you. We'll continue the program. Thank you, ma'am. Now I'd like to call Colonel V. Subritha ma'am for unfolding the theme of the conference. So ma'am has passed BSc Nursing and MS Nursing from College of CMC Vellore 2004. She is doing PhD Nursing Srimanta Sankaradeva University of Health Science Assam 2021.
She's having clinical and teaching experience of 31 years. Ma'am, General Officer Commanding in Chief Continental Commendation 2014 and Chief of Army Staff Commendation in the year of 2015. Ma'am also got appreciation by INC. Ma'am has presented paper and published article in various national and international journals. So I request ma'am, the stage is yours. Very good afternoon to you all. Dignitaries on the dais, distinguished guests, principals of various nursing colleges, faculty, and my dear students. A nurse is not about pills or charting. It's about being able to love people when they are at their weakest moments. No book can teach you how to cry with a patient. No class can teach you how to tell their loved ones that their parents are no more. No professor can teach you how to find dignity in giving someone a bed bath. Why join nursing? In the recent times, many students are taking up nursing as a profession to earn a degree, for job security, for greener pastures abroad, for serving mankind. Those who have an altruistic attitude and would like to serve mankind, they also join nursing. And we can also say all of the above reasons that I have mentioned are motivations for joining nursing as a profession. What is the definition of empowerment? The process of gaining freedom and power to do what you want or to control what happens to you. This is a dictionary definition by Cambridge. It is the process of increasing the capacity of individuals or groups to make choices and to transform those choices into desired actions and outcomes. The concept of empowerment has come about 5 decades back, but over the last few months and over the last few years, we are talking so much about empowerment, not only in the organizational perspective, in the employee and employer relationships, but in various other fields. And now we also talk about empowerment of women, empowerment of various student groups, and also we combine psychological empowerment because empowerment has to come from within. Why empower nursing students? Why have we chosen this topic to speak about empowerment among nursing students? We find in general that there is a lack of empowerment, and if there is a lack of empowerment among nursing students, it is likely to lead to stress, low self-esteem among the students, low performance and attrition. And this as a whole can affect the healthcare system of the country and in the world elsewhere. The present scenario, if we want to see, there are no studies which have actually studied self-esteem or empowerment among the nursing students. There is one study which we found, which was conducted in 2022, which found that moderate level of self-reported empowerment was found among nursing students in the 6 European. There is no data with me of nursing students' empowerment as far as India is concerned. Why are we talking about empowering nursing students? It is very, very important to understand the background of empowerment and how the process of empowerment occurs in various categories of students and more so in nursing students. We will quickly see
some of the factors, the challenges and prospects and way forward. There are various factors that affect empowerment among nursing students. Number one is student-related factors, teacher-related factors, and learning environment factors. Among the student-related factors, the first one is the individual trait. We know that all 5 fingers are not alike. Same way, students are not alike. They have been born with certain personality traits, and that impacts their behavior, whether it is academic or the overall behavior among students. And the students' learning orientation, their inner aim, their strength and their learning motivation also affects the empowerment among students. Another thing which is important is knowledge and skill. When the students are knowledgeable and they are skillful, they are more empowered. Then the third thing is the clinical competencies. When students are placed in the clinical area, if they know what to do, how well to do, then they feel more empowered. And the third thing which plays an important role is the self-esteem of students. If they are valued as a learner in the various areas, whether it is classroom or in the clinical setting, they feel empowered and they are willing to learn. Then comes the teacher-related factors. Now, communication is very, very important for the faculty when they communicate with the students. The clarity of expression, the instructions that are given to the students have to be absolutely clear so that they do not have any doubt. They are very clear in their mind what to do, how to do, when to do, and how much. All these things will all rest, and I don't have to stress the importance of communication in this forum because we all know how important communication is. If I want to communicate ABC and the student understands XYZ, then it is a poor communication. So it is important that teachers communicate well to the students. Number 2 is feedback. When the student does some work, whether it is academic or the clinical work, the student needs to be appreciated. They have to be given a positive reinforcement in what they have achieved. If they have displayed something good, they have done something good, they need to be appreciated. All human beings require appreciation, and students are also to be appreciated by the teachers. Then collaboration. We find that nursing students come after the age of 17 to 18 years. They are adolescents or young adults, and the focus of the teacher must be to work in collaboration. No student should be just directed to do something, but the student should be made responsible in their learning, and it has to be a collaborative effort between the student and the faculty that they are able to achieve all their learning outcomes. Then the fourth point is authority. A teacher who is well read, knowledgeable, is having an authoritarian position, does her work with authority. I'm not saying authoritarian in the sense that she is autocratic, but she has authority over her subject in what she teaches, also makes the students feel empowered to learn under such a teacher. Then coming to the learning environment. When the students are placed in the clinical field, if they are able to do decision making, for example, in the family wards, maternity wards, pediatric wards, students feel more empowered because they are able to deliver care that is required out of them. But they may feel very uncomfortable in the ICU settings or in the operation theatre where the decision making may be reduced, and there are people who take decisions for them and then ask them to do certain activities. So what are the challenges that we are facing as of now? First and foremost is designation. We often hear nursing student or student nurse. We find that in other professions we say medical student, engineering student, law student, and so on. So when we call nursing student, it is in parallel with what happens in the environment. When we call as a student nurse, it doesn't sound very good for the students, and it may reflect a factor as if they are workers in the hospital. So even the
designation of a student is very, very important. It also gives us lack of parallelism with other professions. So this also need to be taken care by the teachers while addressing the students. Then gender typecast. Now we all know that globally only 13.3% of the nursing professionals are males. So there is a gender typecast in this, and when we call nurse, we always think about the picture that comes in front of us is a female person. So to the extent that in certain places they call male nurse as nurse. So this kind of a gender typecast should not be there. In India, in the recent times, according to Times of India, 12th May 2023, it has found that 20 to 30% of males have joined the nursing profession, and it is a good sign for having gender parity in nursing. Then coming to the next factor, that is disparity in course conduction. We all are aware that there are so many colleges that are mushrooming. If nursing students have to be empowered, they require proper education and standardization. Then coming to the next point, that is public image. There are two things. One is trained, another one is qualified. We always say a qualified doctor, qualified professional. So if we just stop saying only training and use qualified, then the students may feel much empowered. And because of this reason, many students who come into nursing perform well, do not perform well, and are having relatively low merit. Then another important aspect is media portrayal. Now, all of us know, if we see a movie, then we will understand that a nurse is there in front of a patient, something happens, immediately she will tell, doctor, doctor. She is not equipped with either performing a resuscitation or something. She immediately calls a doctor, but which is not actual scenario. This is portrayed by the media. Certain media portrays nursing personnel into a sexual being, and certain areas they also show that the nurses take tips. So these are all the things that are against the professional bearing of a nurse. So we must also take pride in wearing our uniform and being neat and clean and dignified when we present to the patients, and become more visible in the clinical area to the public as well as to our patients. So what can we do about all these things? First and foremost is capacity building. Both the students and the teachers need to build capacity. This capacity building can happen with knowledge, skill, and increased participation in decision making. Knowledge and skill in the clinical area will gain respect from patients and from relatives and from other professionals. And the curriculum that is given by the Indian Nursing Council must be strictly followed, and it should be standardized, and every student must be given chance to go to the clinical area and develop skill at the bedside. There can be conferences, workshops, and exchange programs. Number 2, methods to enhance self-esteem. So from the beginning, the students must be allowed for an all-round development, give autonomy, give visibility, give them training for assertiveness and a positive psychology for the students that will help them to improve their self-esteem, and they will feel more empowered. And the third thing is policy making. Generally we find, whether it is a hospital construction or a school of nursing planning or a college planning of curriculum, nurses are seldom involved. So if they are involved in all these things and policy making, important decisions in the government and so on, then the empowerment will be true and good. So what is the way forward? We all have been working at the bedside or in the nursing education. We all use hands-on skills. We all practice empathy, compassion, respect and soft skills. But these have to be increased
we all need to update ourselves with technological advancements. AI is coming in a great way into the healthcare industry, and we all must be technologically savvy, and we all must use all these technological advancements to the fullest in provision of healthcare. However, we should never forget that human touch is the most important one, even whatever technology we use. And we all should never forget that nurses are the backbone of healthcare, and students need to feel empowered that because of them the healthcare will be sustained. So we don't grow when things are easy, we grow when we face challenges. All the best to all the student delegates, and I feel the journey to empowerment has begun, and we all will do the best in the years to come. Thank you so much. Thank you, ma'am. Now I request Madam Mary J. Malik, President TNI UP State Branch, for her presidential address. So, ma'am is a coordinator in 2 research programs, UNICEF Government of India, TNAI. She is a master's trainer of Safe Motherhood, Commonwealth Secretariat, London. Ma'am is a lifelong member of the Indian Confederation for Healthcare Accreditation. Ma'am has won the Best Nurse Educator and Supervisor Award from the Vice Chancellor, King George Medical University, Lucknow. I was a senior guest faculty, Department of Public Administration for Master in Health course, Lucknow University. Ma'am, now I request, please, the stage is yours. Thank you so much. Now I am a president of TNA UP State Branch. All the dignitaries sitting in the respected dignitaries sitting on the dais and off the dais, our guests, various school and colleges principals, delegates, first and foremost is our students. This program is for the students, by the students, and of course for the people of UP. Not I am saying the democracy's definitions, but it is true. SNAI, Student Nurses Association of India, under the umbrella of, she is already covered these all sentences. It is under the umbrella of TNAI. It is TNA started from 1905. It as recognized as to 1908. I am happy to say that it is started from Lucknow only, where I am, where we are. TNA had 34 state branches in India, many branches in abroad also. Every 2 years we have a conference of SNA and TNA. This year SNA conference is going. Every state will compete with many topics like she told. और इस साल का जो थीम है सब जगह दिख रहा है, मैडम ने अब अनवील्ड किया है उस इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया के ज़रिए। तो इस पर क्या क्या कुछ आज का परिवेश में है ये देखने का है, उसको आगे हमको कैसे लीड करना है ये देखने की है। अभी यहाँ एक प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ एक इनागुरल सेशन है। इनागुरल सेशन के अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम्स विद इन समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के अंदर वेरियस हॉल में हो रहा है, और ग्राउंड का प्रोग्राम तो हम लोग करके आए हैं मॉर्निंग से लेकर के। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड പ്രകൃതി അനുകൂലമായിട്ട് വരുന്നു എന്നാ
ये एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है, ऐसे लग रहा है yesterday. हैं? नहीं, many of them are. Yeah, I am living in India, है ना? Of course, we can understand something. Otherwise, how can we survive? है ना? This भाषा इस विदेशी भाषा है. हमको अपने जितनी भी स्टेट्स है, अपने जितने ही मेन बातें हैं, हिंदी इसके लिए बेस्ट है. इस पर भी आना चाहिए. मैं ये नहीं कहती हूँ कोई भी लैंग्वेज खराब है, कोई भी लैंग्वेज सीखना नहीं चाहिए, सबको सीखना चाहिए. आज के दौर में टेक्निकल लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना. सो मेरा ये कहने का मतलब है, ये 7 अगस्त को हम लोगों ने यहाँ पर प्रोग्राम किया. हमेशा हमारा स्टेट का कॉन्फ्रेंसेस अगस्त के महीने में ही होते हैं. 1 डे कर के हम लोग कंपटीशन एंड सब everything is side by side, that is called as simultaneously we are doing every competitions. Now in the building of Samarpan college and pharmacy and various places, we are conducting the competitions. Many competitions are going on. और ये जो नर्सिंग का ये फोरम है, द ट्रेन्ड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसका SNAI स्टूडेंट्स को एकदम से, जैसे मैडम ने अभी बताया, एम्पावर करने के लिए, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट स्टेशन, ये वो दिस एंड दैट बहुत सुनते हैं आप, लेकिन किसी स्टूडेंट नर्सेस को आगे ले चल के एम्पावर करने के लिए आप क्या करते हैं, ये सोचने की बात है. उस बात को देखते हुए देखेंगे तो हमारे INC का विषय में मैडम ने कहा कि INC करिकुलम सेटअप करते हैं पूरे हिंदुस्तान के लिए, लेकिन अब जो है वो INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल खत्म हो रहा है. बिल पास हो गया, इंडियन नर्सिंग एंड मेडिकल का बिल कमीशन के रूप में पास हो गया हमारे संसद से, वो लागू होगा जल्दी से. उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसमें क्या छूटा हुआ है, इसका भी रिप्रेजेंटेशन DNA ने किया. क्या क्या चीज़ें होना चाहिए. हमारा एक पूरा कमेटी है, बुक्स राइटिंग का भी, पब्लिशिंग का भी, हर एक चीज़ का है TNA हेडक्वार्टर में. उसके माध्यम से हमारे सीनियर और वेल एजुकेटेड प्रोफेसर रोई के जॉर्ज है, प्रेसिडेंट TNA के नेशनल, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी, उसमें जो जो करेक्शंस चाहिए और क्या ऐड करना है, हर एक स्टेट से मांगा गया क्या क्या होना चाहिए इस कमीशन के अंदर, NNMC के अंदर क्या क्या होना चाहिए. वो सब हो गया. देखिए ACTs आता है कि नहीं आता है, वो तो बात की बात है. खैर, हमारे इस फोरम में SNAI इसमें एक चौमुखी विकास के लिए कार्य करते हैं. सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल है, स्किल डेवलपमेंट है और टेक्निकल एजुकेशन है, और भी बहुत रिसर्च वर्क कराते हैं. रिसर्च वर्क स्टूडेंट्स के अपने लेवल में करता है और लोगों के अपने लेवल में करता है. वो सारे मिलकर के, इतना भी नहीं है, यहाँ पर आज कॉम्पिटिशन्स और भी बहुत से होंगे. अभी तो डांस का आपने देखा होगा, और फिजिकल में ग्राउंड में आपने बहुत कुछ देखा होगा. हाउ नर्स स्टूडेंट्स आर, स्टूडेंट्स में बॉयज एंड गर्ल्स बोथ कैसे करके वो लोग दौड़ने में, बाला बल्लम फेंकने में, शॉर्टपुट में, हर एक चीज में आ गए. तो मेरा कहने का मतलब है कि फिजिकल एक्टिविटीज भी है, मेंटल एक्टिविटीज भी है, सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, सब मिलकर के एक फोरम दिया हुआ है TNA ने SNA को बहुत सी चीजें. SNA का एक यूनिट स्कूल या कॉलेज रजिस्टर होकर के करते हैं, तो एक एक स्टूडेंट को क्या क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं, क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, ये सब आप अपने इस हमारे TNA और SNA का वेबसाइट पर जाकर का ढूंढ सकते हैं.
इतना 34 स्टेट की बात मैंने कहा, 34 स्टेट्स इन इंडिया, वो सब जगह से कंपटीशन पास हो करके फर्स्ट प्राइज विनर्स को नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भेजेंगे। वो वहां पर भी बीट करेगा तो इस तरीके का बहुत प्राइसेस मिलेगा। और पेपर प्रेजेंटेशन में अलग से वो मिलेगा, और स्पोर्ट्स में और अन्य उसमें हर उसमें मिलेगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, ये एक फोरम आपको चौतरफा प्रोग्रेस के लिए है। सिर्फ पुराने जमाने के एक ट्रे ले ली और 4 गोली रख दी और एक इंजेक्शन का सिरिंज नीडल रखी, वो मात्र नहीं है। नर्स मीन्स वो मात्र नहीं है। मैडम ने वो एम्फसाइज किया। उसी पर आगे हमको empowering the students, nurses, many are working for empowering the women, but we need to empower the nurses. और ये कॉम्पिटिटर बच्चे सब जो है, हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा तेलंगाना में नवंबर के महीने में होगा। नवंबर 27, 28, 29 ऐसे करके होगा। 23 से लेकर के हैं वो सब मीटिंग्स वगैरह होगा। लेकिन इसके लिए भी यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट होकर के आपको जाना है। परफेक्शन या परफेक्ट कोई नहीं होता, ये सब तो जो है कंटिन्यूस प्रोसेसिंग है। उस प्रोसेस के जरिए आपको अपने आप को अपडेट करना है। ये कभी कोई नहीं सोचना हिंदी बोलने वाले पीछे या इंग्लिश बोलने वाला आगे, ऐसा नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में तेलंगाना जाएंगे तो तेलंगाना वो भी सीख लीजिएगा, ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो इस तरीके से हमें जहाँ कहीं भी जाएं, हम अरब गए हैं, वहाँ मैंने सोचा अरबी तो हमें आता नहीं है, मुँह में रास्ता भटकना नहीं है, तो वहाँ हमको इस बात मैडम है ना 2 लोग जानते हैं। सऊदी अरब के अंदर हर जगह मलयालम लिखा हुआ इंडिकेशन आपको मिलेगा। खास तौर से जिस जगह पर हम गए हैं, मक्का मदीना जितने इम्पोर्टेंट शहर है, वहाँ सब लिख मिलता है। ऐसा नहीं है मलयालम बहुत पीछे है, मलयालम बहुत आगे है और केरला बहुत आगे है, है ना। और हर जगह हमको, मैं एक जगह भीड़ में हमारे साथियों के बीच से छूट गया, तो मेरे हस्बैंड के उस समय पर तो पैर एकदम से वो था, उसके बाद नहीं रिप्लेस किया है। वो जहाँ पर हम लोगों को ठहराए रखा था वहीं थे, ये भी परेशान हो रहे थे। फिर भी इन्होंने कहा, इनके ऊपर इतना मॉरल सपोर्ट हमारे प्रति था, तो इन्होंने कहा वो तो चली आएगी, आप लोग परेशान मत होइए। हमारे और लोगों से कोई फोन करें, बताएं, ऐसे सब कहा। मैंने वो सब पढ़ करके रास्ता बता करके दे करके इतने, जैसे हम लोगों को कुंभ मेला वगैरह होता है ना, उसी में जितना जैसे भीड़ होते हैं, अलग अलग जगहों पर ठहराया जाता है, उसका कुछ न कुछ इंडिकेशन हमें लेना होता है। तो हम इंडिकेशन, फर्स्ट लैंग्वेज होंगे अरबी, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, थर्ड लैंग्वेज मलयालम, हर जगह हमको लिखा मिला। सो आई हैव नो प्रॉब्लम एट एनीवेयर, है ना। यूपी में तो 54 साल हो गया। हिंदी अच्छी हो गई ना, इम्प्रूव करेंगे। और मेरे कहने का तात्पर्य है, हमारा ये SNAI का या TNA का फोरम केवल एक ऐसे नहीं है, हमारा ये एसोसिएशन कोई पॉलिटिकल नहीं है, कोई बेनिफिशियल नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। हम आपके लिए काम करते हैं, आप हमारे लिए करते हैं। अल्टीमेटली उसका जाता कहाँ है, हमारे पब्लिक हु आर लिविंग इन द प्लेसेस वेयर आई एम, है ना। ये होता है, हमारे लोगों के लिए हम कर रहे हैं, हमारे लोगों के बीच से उठकर कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें उतना तत्पर करके और एफिशिएंट बनाना हमारा बड़ों का काम है। उसके लिए जैसे RS सर जो है हमारे यहाँ के लिए, जितने भी इंस्टीट्यूट है इसका फाउंडर है, पितामह है और सब कुछ है। वो क्या कुछ नर्सेस के लिए ही नहीं, पैरामेडिकल्स के लिए भी कर रहा है। अल्टीमेटली वो सब लोग किसके लिए काम करेगा, यहाँ के पब्लिक के लिए करेगा ना, यूपी के पब्लिक के लिए करेगा, या और कहीं से भी हमारे जैसे आए तो उनका भी करेगा।
तो इसीलिए परफेक्शन ज़रूरी है। परफेक्ट कोई भी दुनिया में नहीं होता है, पर हमें वो बनने के लिए निरंतर परिश्रम करना चाहिए। ये है। ये सब बातें बच्चों के लिए मैं ये कहूँगी, पढ़ने लिखने का या एक्सपीरियंस गेन करने का कोई उम्र नहीं होता है। मैं KGMU से रिटायर्ड पर्सन हूँ। मैंने आज तक पढ़ाई नहीं छोड़ी और आज तक वर्किंग भी नहीं छोड़ी। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं करते रहते हैं, कितनी तकलीफ हो कितने क्या हो। तो इसलिए हम बोलते हैं मेंटल स्टेटस सही होना चाहिए, शारीर वो पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट करना चाहिए, एग्जीक्यूट रहना चाहिए। सब हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम हमारे बुलावे पर, कोई और का बुलावे पर, देखो कितने कितने जेंटलमैन आ करके हमारे बीच बैठे हैं। कुछ लोग किसी कारणवश नहीं आया, उनका भी हमारा नमस्कार। वो आए, देखिए कोई भी गवर्नमेंट सेटअप में रहता है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होता है, उनके आगे पीछे होना है। इस समय देखिए सेशन चल रहा है, विधानसभा का सेशन चल रहा है। जाहिर सी बात है, तुरंत देखे तो क्वेरीज मांगे, कुछ करेंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को वहाँ होना चाहिए। मेडिकल एंड हेल्थ से संबंधित जितने भी है, मेडिकल फैकल्टी के रजिस्ट्रार को वहाँ होना चाहिए, हाजिर जवाब है ना। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, हमारे जैसे कुछ लोग भी चाहिए ना, है। आप सबके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ आए हैं और आपका अपना व्यूज इन बच्चों के बीच करेंगे। इतने बच्चे नहीं हैं, सब जगह जगह प्रोग्राम में हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, उनके टीचर्स है और उनका प्रिंसिपल्स है, वो सबको ही है। लिहाजा मैं बहुत लंबा जाएंगे तो मैं बोलने लगा तो बहुत बोलते हैं और बहुत नहीं, ऐसा नहीं है, और लोगों के लिए भी समय चाहिए। ये जितने भी प्रोग्राम हैं वो बहुत बहुत सक्सेस हो, बहुत गुड विशेस मेरा है। आप सब लोग यहाँ से यूपी बहुत हाई उसमें जाए, जाकर के नेशनल में भी रिप्रेजेंट करें, वहाँ से भी लेकर के आए। इससे पहले का कॉन्फ्रेंस हमारा वर्चुअल था, उसमें बहुत कम लोग अपियर हुए थे। 21 एंड 22 जनवरी करके हम लोगों ने किया था। ये 23 का कॉन्फ्रेंस हमको उन सब से आगे पार होकर के करना है और नेशनल लेवल में भी अच्छा परफॉर्मेंस देना है। और 19 का जो कॉन्फ्रेंस था कोयम्बतूर में था नेशनल, हमारा यूपी ऑल ओवर हिंदुस्तान के अंदर तीसरे पोजीशन में आया था। हमें बहुत बड़ा वो सब मिला था, हमें इतना गर्व हुआ, बहुत अच्छा लगता है। हमारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, फैकल्टी और प्रिंसिपल्स इतना मेहनत करते हैं, उसका फल मिलता है। हम जाकर गुडविल में खड़ी हो जाते हैं और सबके साथ में हम खड़े हो गए, मुझे बहुत खुशी हुई वो सब लेते हुए, है ना। ऐसे कोई चीज़ अगर मिलेंगे तो है ना। अभी मैं ये भी कहूँ, यहाँ पर मैडम भूमिका सिंह है, हमारा SNAI एडवाइजर कम सेक्रेटरी है, वो अपने फादर इन लॉ के नाम से ये रोलिंग कप डोनेट कर रहा है। डोनेट नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए, और डेडिकेट कर रहा है यूपी स्टेट ब्रांच को। आज स्पोर्ट्स में सबसे हाईएस्ट जो आया होगा स्कूल या कॉलेज, उनको देंगे, वो रनिंग करेगा। अगर 3 साल एक ही स्कूल कॉलेज को मिला तो उनके हो जाएंगे। हमारे कई शील्ड्स ऐसे चले गए, यहाँ ऐसे भी लोग बैठे हैं, है ना, वो अपना कर दिया, है ना। अब 2 बचा है, ये 2 शील्ड है, तीसरा आ गया। ऐसे कोई ना कोई मेहरबान लाएगा, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, हमारे हर तरीके की बधाई। और आप सब बहुत अच्छे से प्रेजेंट किए, अच्छे से अच्छे नेशनल में भी जाइए। वहाँ तेलंगाना का कोई मैडम इधर आप लोगों के बीच हो तो उनसे भी दोस्ती कर दीजिए, करके चले जाइएगा। हैदराबाद में होगा। अब मोर डिटेल हमें 24, 25, 27 में नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग दिल्ली में, उसके बाद मैं कह सकूँगी। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, टीचर्स, फैकल्टी, प्रिंसिपल, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, ma'am.
Now I request Mrs. Bhumika Singh, currently State SNI Advisor and Secretary, TNI UP State Branch, for a report presentation. So ma'am is a RN MSc in the field of OBG and also PhD scholar. She is having 11 years of experience in clinical teaching as well as administrative work in nursing field. She is experienced in organizing workshop and state level conference. She also initiated e-nursing journal in the name of Angel of SGPGIMS. Second volume released on 12th May recently 2023. She was awarded TNI UP State Branch for her excellent work contribution at state and national conferences in 2018. She has received Best Future Nurse Category Award based on International Nurses Team, Our Nurses, Our Future on 12th May 2023. She is also very active in sports and other extra activities. She won many prizes in various sports activities like long jump, shot put, marathon and badminton. Thank you ma'am for coming. Over to you. Thank you, Sunanda madam, for your kind words. A very good afternoon to all the dignitaries, respected dignitaries on the rise, all the principals of various colleges and schools, and my dear students. I would like to welcome on the behalf of TNI UP State Branch to all. Good afternoon, students. So I am your friend because I am the State SNA advisor. So I am related to you and you are related to me. Okay? I think we are meeting first time. No? So welcome you all. So madam, she explained all about the TNI. So I have to present some points about the TNI UP State Branch. Okay. So, madam, she told you about the TNI. I want to add in this the origin of the TNI UP State Branch. In 1950, the TNI UP State Branch was officially inaugurated. So, we are working since 1950. TNI UP State Branch. Now, this is the elected member of the TNI UP State Branch. Those who are working nowadays. This is the team of TNI UP State Branch. So these are the executive members of the TNI UP. You all are aware with the madam, our president madam, Mrs. Mary J. Malik. Next is Mrs. Satwant Kaur Sohail. She is a vice president of TNI Uttar Pradesh branch. She is quite sick. That's why she could not be able to join this event. And myself, as an advisor and secretary. Next is Mrs. Nazia Zadi, chairperson, program committee and joint secretary. Mrs. Dolly Victor, treasurer, TNI UP State branch. Sister MC Alex, chairperson, membership committee, TNI UP State branch. Mrs. Neema Pan, chairperson, nursing education committee, UP State branch. Ms. Aarti Sarkar, chairperson, nursing service section, UP State branch. So these all are the EC members of TNI UP State branch. After the election, we have visited the TNI headquarters. So these are some glimpses of that visit. So all EC members, they have visited headquarters. Now we have also elected our students, SNAI student representative of TNI UP State branch. TNI Uttar Pradesh branch has conducted election to elect SNAI student representatives as per guidelines given by the headquarters. And under the supervision of our president madam, election process was conducted on 30th November 2022 through online channel. These are the elected students of the SNAI of UP State branch. So we have with us the president, vice president of student representative, Miss Sonam. Sorry, she is from Fatima College of Nursing, Lucknow.
Secretary is Miss Srishti. She's from Fatima College of Nursing Mau. Her name is Miss Srishti from BCM College of Nursing, and Prashant from Tirthankar. He's a program chairperson. Then some activities we have conducted under the umbrella of SNAI UP State Branch. In 2019, we have conducted two days workshop with the collaboration of College of Nursing, BHU, at Sir Sundar Lal Hospital. In this, there were total 110 participants were there, and we have also given some credit points to all the participants. Then we have also organized SNAI orientation program for the students. We have organized during the COVID period. So we have organized through the online channel. In this, total 700 students participated through the online channel. And this, we have also kept one talk for the students, that the topic was impact of COVID-19 on students' educational life. Then also we have conducted our 28th State SNAI Biennial Conference in 2019 at CMU College of Nursing. You can see some glimpses of the conference. In that conference, total 14 College of Nursing participated. 29th State SNAI Biennial Conference we have conducted virtually, and in that total 7 colleges participated. Then SNAI headquarters team visited Lucknow for seeing the plot for the SNAI office. So SNAI UP State Branch visited along with the headquarters team. So we have seen 3 plots, and one we have selected, and we have sent the proposal to the headquarters, and then President Sir visited UP, and he has seen all the 3 plots. We have finalized, we have sent, but the third person is not able to, which plot we have finalized, that person is not able to produce all the papers. So we dropped that 3 plots. Now we are again searching for the plot to open the SNAI UP State office. These are some glimpses of like we have conducted this year with the collaboration of again College of Nursing BHU. Madam attended that program, and also the headquarters conducted the principals meet zonal wise. So first zonal meet we have conducted here only in the Samarpan College of Nursing. So these are the glimpses of the that event. This is the second zonal meet which was conducted in the Subhati College of Nursing Meerut, and third one is pending. We have also visited the Department of Medical Education UP and met with the Sir BSR and the Kinjal Nam. We have also visited UP State Medical Faculty. The upcoming event of the SNAI UP State Branch, SNAI Uttar Pradesh Branch endorsed the international conference with 3 credit points going to be organized by Baba College of Nursing on 11th and 30th August 2023. This is our upcoming event. So I request all of you to join that event. Now plan for the upcoming year for 23 to 24. First and foremost and very important plan is try to purchase the land for SNAI UP State Branch Office. This is a very important plan for us.
and we are looking for the plots. Then next plan is have a zone-wise campaign to form a new SNAI units, because nowadays we have only 21 units in UP State Branch, and we have more than 700 colleges and schools in UP. So we have to increase the number of SNAI units. Next is plan for state GNI conference going to be happen in the year 2024. This year we are conducting SNAI state conference. Next year we are going to conduct GNI state conference. So we have to plan for this that conference only. Try to send students for skill development batch wise to GNI headquarters. As we all know, we have the skill center over there. So we are also planning to send the students college wise there for their skill development. Next agenda is perform 2 days and 7 days workshop regularly as per GNI rules and regulations. Next, for better development of UP GNI, keep collaboration with colleges and schools of nursing and other associations. So this was the points or agenda or plan for the year 2023 or 2024. Thank you all. Thank you, ma'am. Now I request Madam Rinku Lakra from OET Delhi Head Office, Business Development Manager, North India, for our presentation. Hello everyone. Hello. Hello. Hello everyone. I'm not going to take very long. First of all, I would like to thank you, all of you, giving me an opportunity to speak here. I'm Rinku. I'm from OET. I look after the north part of India as Business Development Manager. I'm not going to take very long. First of all, I just want to introduce OET. And why OET? This is an exam which is specially designed for healthcare professionals. So I won't talk about exam today. I will talk about more about empowering and communication. How communication plays an important role when it comes to empowering any profession. Specifically, if I talk about nursing, because nursing is one of the professions that requires a lot of communication. It's among the it's between the patient and nurses and doctors,
among each other. So nursing is one of the profession that is, I say, core base is the communication, like, you know. So I think I'll just go a little with the slides. That will be a much help of talking about empowering and communication both. A good communication, a clear communication basically creates a very positive environment, right? That gives us a lot of confidence to speak. If I speak about OET, how OET can help you, how preparation can help you, basically to improve your communication. Communication could be in any of the form. It could be any of the language, Hindi, English, or maybe any different language. But here, today I'm going to talk about English as one of the skill. Because I see English is a connective language to all of us. We may be from different regions, different states, different backgrounds, but maybe not speaking one single language. We may all of not understand Hindi, or we may all of not understand maybe Malayalam or Telugu, or maybe French or Spanish, you know. So in today's world, if I see, then English is one of the connecting language. It's within the country and also outside the country, right? I just quickly talk about the international demand on for international demand for nurses, and why communication is important to basically fill that gap. I'm just going to connect on that. I'm not going to go through the entire slides, how to prepare for the exam and all. So the first thing is, we all, like, as in if I talk about the students, not about like principals today, but if I talk about the students, then most of the students will be aiming for government jobs here, right? So which is perfect. But people who are looking forward to work in English-speaking environment, maybe they have dream to go and work in any of the foreign English-speaking countries, then OET is one of the exam which is specially designed for healthcare professionals. So this really going to help you to improve your communication skills and will be able to help you to bridge that gap which all of these countries, the English-speaking well-developed countries, really have in terms of lack of nurses, right? The gap is because most of the nurses, they are early retiring, aging population. Their young population do not want to go for this profession because this is like a most demanding profession of your time, your energy, and it takes a lot of dedication to be a nurse. So their young generation is not so dedicated towards this profession. That's why a lot of people not prefer taking this as in their career. Whereas we Indians think in a different way when it comes to connecting with people. So that's why I say that we have amazing nurses in comparison to the entire world. That's why we are such a big source country for entire world. Right? So to connect, to basically go and work in any of these English-speaking countries, we need to improve our communication. And that's not only the thing that we need to improve our communication skills, just to go and work in these countries, we also need that communication skills here back in India. Right? To connect, maybe one of your colleagues is from Northeast, one maybe from South, one maybe from North part of India. So how will you communicate with each other? We have to have one single way of communicating, and that is English, right? We may, like, being a multilingual is always nice, right? But I think improving on English is very, very important. And once you have your level of B2, then you can also prepare for your OET if you're dreaming to go in any of the English-speaking country. I won't take long now.
we have this exam available for all 12 different professionals. So I would suggest that any of you would like to know more about it, please connect to me and I'll be able to help you with the more information. Right? I'll be taking a leave and I'm really thank you for giving me this opportunity to speak here and introduce OET to all of you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Now I request Mr. Neil Chajjar, Brand Manager Himalaya Wellness Company. He's having 8-year plus experience in his field, to talk about few words in a Himalayan group. कर दीजिए ये Hello. Good afternoon, everyone. Respected Dr. R.S. Dubey sir, Chairman SNPS, Dr. Deepti Shukla, Principal SNPS, Mary Malik Madam, President, TNAI UP State Branch, Ms. Bhumika Singh, Secretary and Advisor, TNAI State Branch, Principals of various schools and colleges, dignitaries on the dais and off the dais, and dear students. Once again, a very good afternoon. So, let me give you a brief about myself as has already been discussed. So, me and my colleagues here, we are from Himalaya Wellness Company, particularly from the Himalaya Baby Care Group. And so, if I talk about the company, it's a 90-plus-year-old company now. We started our operations way back in 1930, and we are particularly present in 4 or 5 major verticals. The first one is the personal care division. The second is the baby care, from which we particularly belong. Third is the animal health care. Fourth is the pharmaceuticals division. And pertaining to, from a nursing standpoint of view, let me tell you that we are doing a lot of initiatives we have taken over the years, and we are engaging in a lot many activities around the year, especially for the nurses. We are doing, if you see, we are doing the NEP initiatives like education programs on variety of topics such as kangaroo mother care, breastfeeding, then atopic dermatitis, and many more. So every month we ensure to cover one or the other topic, and we educate the nurses on these particular topics. So I'll just play a short video for a couple of minutes. Would request you to please have a look at that. Himalaya began as a one-man business in 1930 with the goal of bringing the traditional science of Ayurveda to the globe in a modern way.
over 450,000 doctors globally prescribe Himalaya products. Himalaya baby care products are infused with the goodness of herbs, free from harsh chemicals, clinically tested and hence safe for babies. Himalaya Baby Care is the #1 prescribed brand of baby care products, claimed by 97% of doctors. We promise authentic, effective, quality and safe products for babies. Himalaya Baby Care products are gentle, safe, researched and free from harsh chemicals. Our products are available in 20,000 hospitals across the country, and we meet with 60,000 doctors and 40,000 nurses every month. We believe that nurses are the most important pillars of the medical fraternity. We have initiated a number of programs to recognize their selfless efforts. We felicitate nurses who have selflessly served for more than 10 and 25 years on International Nurses Day. We conduct nurses education program across the country to empower them with knowledge on various mother and baby related topics such as kangaroo mother care, neonatal care, post-term pregnancy, care for a premature baby, preterm birth and much more. Himalaya Baby Care thanks all the brave and determined nurses for all their support in helping a mother and a child. We thank you for your ongoing support and we look forward to your continuous advocacy for us. So thank you so much once again for all your support that you have given over the years to us, and we hope that you continue giving that support in the future years to come as well. Thank you. Thanks. Thank you, sir. Now I would like to request our guest of honor, Dr. Alice Dubey, sir, Chairman of SNAI. So please come over here and speak few words. आप सभी का समर्पण प्रांगण में स्वागत है। मैं अपनी बात बड़ी संक्षिप्त में कहूँगा और बहुत से बात हुई हिंदी में, इंग्लिश में, लेकिन मैं हिंदी में ही बोलूँगा। मैं आपसे उस रूप में ज़्यादा कमेंट कर पाऊँगा ऐसा मैं समझता हूँ। सबसे पहले मैं जो लोग नहीं आ पाए अपनी व्यवस्था से, आलोक कुमार जी जो हमारे प्रमुख सचिव थे जिन्होंने कहा था, और डॉक्टर आलोक कुमार श्रीवास्तव भी नहीं आ पाए, सडन बुला दिया गया क्योंकि विधानसभा चल रही है। मैं उन सब का को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि हमसे जुड़े हुए लगातार जुड़े हुए फ़ोन से बात हो रही है, लेकिन नहीं आ पा रहे उनकी मजबूरी है। मैं मलिक को और मिस्टर गुंजा सिंह को और डायस में जितने बैठे सभी लोग हैं, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने भी ऑफ द डायस
जितने प्रिंसिपल्स आए हुए हैं, जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, मैं सबका सहृदय स्वागत करता हूँ। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि दुनिया बहुत छोटी है। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनसे मैं बहुत पहले मिल चुका हूँ और आप सबसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। समर्पण के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि आप सब दूर दूर से यहाँ पे आए। आने में भी परेशानी हुई, रहने में हुई होगी, अभी और परेशानी सामना कर सकता है, बरसात हो ही रही है, देख रहे हैं आप लोग। सबके बावजूद जो आप में उत्साह है, जो उमंग है, जो करने की क्षमता है, जिस तरह से आप लोगों ने बात को रखा है, वो काबिल तारीफ है। थोड़ा मैं बताऊँ समर्पण के बारे में, अपने बारे में बहुत संक्षिप्त में, कि आप बहुत से लोग जब से मैंने नौकरी शुरू की है तब से आप लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे, ये कहना चाहता हूँ। और शुरू से मैं पेशे से मैं सर्जन रहा हूँ, सर्जरी करता हूँ, कर्म योगी हूँ और कर्म पे विश्वास करता हूँ। और इंसान को सर्व कर्म करते रहना चाहिए, ये मेरा मूल सिद्धांत है। तो यही मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ। मैं प्राइवेसी मेडिकल हेल्थ सर्विसेज में पारामेडिकल हॉस्पिटल लखनऊ से मैं रिटायर हुआ। उसके बाद ऐसे ही मेरे मन में विचार आया, 2009 में रिटायर हुआ मैं। और उस समय जब मैं लोहिया में था, मैं या जहाँ भी था, जिस फील्ड में था, मैंने हमेशा कोशिश की कि जितना अच्छा काम हो सके उतना अच्छा किया जाए समाज के लिए। बच्चों, आप सब एलिंग ह्यूमैनिटी के बैकबोन हो। और जो स्टिग्मा है आपका समाज में, जिसको मैंने हमेशा फेस किया है राइट फ्रॉम 1968 से, जो नर्स के बारे में जो समाज की फीलिंग है, मुझे हमेशा कोफ्त होती थी कि ऐसा समाज क्यों सोचता है। शुरू में मोस्टली नर्सिंग स्टाफ केरल से आता था, ग्रेजुअली ये चेंज आया और आज वो चेंज ऑब्वियस हो रहा है, जिसके लिए आप सभी लोग TNI के जितने मेंबर्स सब लोग बधाई के पात्र हैं। रिटायर होने के बाद ऐसे मेरे मन में ख्याल आया क्यों ना, जब समाज से कुछ लिया है, इतना किया है, तो समाज क्यों ना दिया जाए। तो ये बात 2009 की होगी और उसके एक साल बाद ही मैंने 2010 में इस संस्थान का निर्माण करना शुरू किया और 2010 से संस्थान शुरू हुआ और आज आपके सामने इस रूप में मौजूद है। आप विश्वास नहीं करेंगे, इसके पहले मेरे मन में कल्पना भी नहीं थी, लेकिन जो मैंने फील किया था इतने सालों में, देखा था और जो मैंने अनुभव किया था, उसको सोच मुझे लगा कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ कुछ अपने फील्ड के में हम कर सकते हैं। और मेरा सतत प्रयास रहा है, मैं करता रहा हूँ, करता रहूँगा, करना भी चाहूँगा मैं। दूसरी मेरी फीलिंग रही है कि मैं हमेशा क्वालिटी का पाबंद रहा हूँ। मैं आया 1-2 साल में ऐसा लगा कि किस मेस में मैं आ गया हूँ, जहाँ पे नारे की प्रॉब्लम, पढ़ने की प्रॉब्लम, बच्चों की अपडेट नहीं होने प्रॉब्लम, सुविधाएं नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, ट्रेनिंग सुविधा नहीं है, तो अजीब सुविधाएं होती थी। लेकिन ग्रेजुअली करते 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 जो मैंने शुरू किया था, मैं फ्रेंकली कहना चाहता हूँ, जो मेरे मन में था, अब यहाँ पे प्रिंसिपल बैठे हैं नर्सिंग कॉलेजेस के, मैं उनसे साथ करना चाहता हूँ कि मेरी उलझन होती थी कि बच्चे क्यों नहीं ठीक पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ाया जाता, क्यों उनकी ट्रेनिंग होती, क्यों उनका क्वालिटी असेसमेंट क्यों नहीं होता। ये सब बातें हमारे में आती रहती थी, लगातार कोशिश करता रहता, प्रयास करता रहता था। और उसी क्रम में अभी किशाई हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं, हमारे कलीग कहते हैं कि क्या किशाई मुसीबत आ गई, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मैं लगातार फील करता था कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो हमारे सिस्टम को अपग्रेड करे, क्वालिटी करे, एश्योर करे, लेवल लाए, बच्चों को सिखाए, अच्छा काम करे। किशाई आप सब बहुत कम लोग जानते होंगे, इट्स क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो 2004 में स्टेब्लिश हुई थी। और उसका पर्पज यही था कि हर फील्ड में, सिर्फ नर्सिंग फील्ड तो अभी आपके यहाँ 1 साल पहले आ गया है, मेडिकल फील्ड में 2004 से था ये, उसे एसेस करते थे, कॉलेज से NABS दिया करते थे,
जब मैं लोहिया में था 2007 मैंने डायरेक्टर ज्वाइन किया था, तो 2 साल के अंदर आई वॉज द फर्स्ट पर्सन एंड लोहिया हॉस्पिटल वॉज द फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन इंडिया हु गॉट दिस सर्टिफिकेशन बाय NABH। तो मेरा लिंक तब से QCI से है। मैं जानता हूँ क्या वैल्यू QCI की है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। डोंट अदरवाइज ये आपकी क्वालिटी की क्षमता बढ़ाता है, बस इसे एक्सेप्ट करें आप। उसी रैंक में आपने सुने होगा कि विदाउट बियर अभी बताया उसके बारे में कि बियर A ग्रेड में है, कापूस कॉलेज है उसमें, क्योंकि हमें पता था कि क्या वैल्यू है, कैसे करना है, क्या सिस्टम है। उस सिस्टम की इवॉल्व करेंगे तो आप भी वहीं पहुँच जाएंगे। और ये ऐसा प्रोसेस है जो सतत चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि आज हम टॉप पे हैं तो वही लेना, कल दूसरा आएगा, परसों तीसरा आएगा। किसी से पूछेंगे क्वालिटी इंप्रूवमेंट का मैटर है ये, कि हमें हमसे फॉलो करना चाहिए और एक हेल्दी कंपटीशन हमारे आपस होना चाहिए, वो हम करते रहें। योग्यता बहुत बड़ी चीज़ है, हमें उसको लाना चाहिए आपस में। गुणवत्ता एजुकेशन के फील्ड में सतत होना चाहिए। बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, प्रिंसिपल से ज़्यादा जानते हैं, इसके बारे में आप ज़्यादा जानते हैं कि कितना स्टैंडर्ड नीचे डाउन हो गया, लेकिन ग्रेजुअली हमें आगे बढ़ना है, कुछ हताश नहीं होना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर अपना जो अचीव करेंगे। एक दूसरे से सहयोग और विश्वास, एक दूसरे ट्रस्ट, ऑलवेज इस हेल्दी कंपटीशन है, बैक बैटिंग कभी नहीं होना चाहिए। एक वातावरण अपने कॉलेज में, संस्थान में बनाई, अपने बच्चों में। अभी को बताया गया डिटेल, मैडम मलिक ने बताया आपको, भूमिका सिंह ने बताया आपको, मैम अभी रिंकू मैम आपको बताया आपको उन्होंने कि लैंग्वेज क्या है, कैसे करना है। ये सब बातें ऑलरेडी हम लोग कर रहे थे, बट आई एम वेरी हैप्पी टू नोट एंड सी एंड से दैट हम और जुड़ना चाहें। कि मेरी तमन्ना ये थी आप आ गए हैं तो मेरी हेल्प हो जाएगी, हमारे कॉलेज की हेल्प हो जाएगी। सभी बच्चों का एक समग्र विकास होना चाहिए, सिर्फ यही नहीं कि अपना आए अभी मैडम कर रही है, छोटे सही कह रही हो कि सुई लिया जैसा लगा ट्रेन है, ये काम नहीं है आपका, ये काम नहीं है। ये तो एक वर्क है जो करना है, बट जो मेन आपको काम है कि आपको स्टिग्मा से बाहर आना है और इस समाज को ले आना है, उससे बाहर ले आना है। ये एक खास बात है। अपने को किसी से कम मत समझिए, उस भावना से बाहर आइए। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, उससे बाहर आइए आप, और सो दैट यू आर द बेस्ट, यू आर बैकबोन ऑफ सोसाइटी, यू आर बैकबोन ऑफ एनी ह्यूमैनिटी। इसका आप गर्व कीजिए। सुबह उठिए आप, मॉर्निंग में 2 मिनट बैठ कर सोचिए अपने बारे में और अपने कहीं नो आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट वर्कर in this era, in this field. मैं अपनी बात लंबी नहीं कहूँगा, आप लोग कहेंगे साहब क्या बोलते जा रहे हैं, डॉक्टर साहब बोलते जा रहे हैं। मैं ऑलरेडी आई 76 मैं प्राप्त कर चुका हूँ और मैं अभी बहुत कुछ करने की प्लान कर रहा हूँ, करता जाऊँगा जब तक जिंदगी है। मैंने आपका चले हुए करते रहो जब तक सांस है, अंतिम सांस तक करते रहो, उसको मत छोड़ो। इस चीज़ के साथ और जो कुछ मैंने किया है अपने स्वांतर सुख के लिए किया है, ये मत कही कि मैंने कोई कि एहसान नहीं कर, नहीं, मैंने अपनी खुशी के लिए किया है। और मैं चाहूँगा कि आप जितने लोग हैं, मैं सबके इन्वाइट करता हूँ कि हमसे जुड़िए, पर्सनली जुड़िए, कॉलेज जुड़िए, सब आगे बढ़िए और इस प्रदेश को, इस न्यायिक संस्था को, इनके लोगों को खुद बढ़िए और बढ़ाइए। मैडम अभी कह रही थी कि हमारी मेडल चली गई, मेडल चला जाएगा, कई बार कह रही, मैं सोच रहा था। मैडम यहाँ से ऐलान करता हूँ, एक मेडल आप मुझसे ले लीजिए, समर्पण से ले लीजिएगा। आप जो कहें जैसा है, एक मेडल हम आपको दे देंगे। और अभी नहीं, मैं कहता हूँ कि हम जब तक एग्जैक्टली आप हम एक हैं, वो अलग आप थोड़ी चाहिए आपको। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हम सब मिल करके, हम लोग एक हैं, अपने प्रदेश के हैं, हम सब मिलकर काम करें, जुड़ें, एक दूसरे विश्वास रखें, एक दूसरे सहयोग करें, एक दूसरे हेल्प करें और इस प्रदेश को, यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाएं, अपने पड़ोसियों को, अपने देश को, अपने कलीग्स को, अपने रिलेटिव्स को आगे ले जाएं। क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं इस फील्ड में जो कहीं नहीं है। मैं बातों में लंबा नहीं ले जाऊँगा, बट नहीं कह सकता हूँ कि जिस दिन आप सोच रहे हैं आई एम द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, ये मेरा तय कहना आपसे। रिटायरमेंट के बाद मैंने 2 कॉलेज शुरू किया, एक यहाँ पे है, एक और TS मिश्रा के बच्चा है, शायद आए होंगे, वहाँ मैंने शुरू किया, मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिश किया।
मार्गदर्शन शुरू किया, तो करता जा रहा हूँ। लेकिन इन बातों को न करके बस अपनी बात समाप्त करना नहीं चाहूँगा मैं कि आप लोग आए हैं, देख रहे हैं बरसात हो रही, प्रॉब्लम हो रही है, आज गेम में भी हो रहा था। एक ईश्वर की बड़ी अजीब कृपा है कि जब भी मैं कोई काम करता हूँ जिंदगी में, शुरू से ही जब से मैं समझदार हुआ, मेरे हर फंक्शन में बरसात होती है, चाहे मैं कभी करूँ, मैं ये होते रहता है। तो मैं ईश्वर को यूँ मानता हूँ, ईश्वर का आशीर्वाद हमारे बरस रहा है और उसको हम लोग खुशी खुशी स्वीकार करें। एक दो लाइन और मैं कहना चाहूँगा आपसे इसी बरसात को लेकर के। गिरे शिकवे ना दिल में लगा लेना। ये बरसात हो रही है, गीली मिट्टी है, भीग जा रहे हैं, उसी पे गिरे शिकवे ना दिल से लगा लेना, कभी मान जाना, कभी मना लेना। कल का क्या कहता है, हम हो न हो, थोड़ा हंस लेना, थोड़ा हंसा देना। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ। जो कुछ भी परेशानी आप यहाँ हो, तकलीफ हो, उसे सहर्ष स्वीकार करें और समर्पण संस्थान को और आप अपने आप को भी धन्यवाद दें। थैंक यू। Thank you so much, sir. Moving forward, in loving memory of late Sri Radhe Raman Sen, Sports Rolling Cup dedicated to TIN UP branch for the highest prize winner, College of Nursing or School of Nursing in Sports. So I request Madam Bhumika Singh, Secretary and SNA Advisor, TNI UP, kindly hand over the Sports Rolling Cup to Madam Mary J. Malik, President TNI UP State Branch. All ये स्पोर्ट्स में जो सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर ले आएगा, हम ये कहना चाहते हैं आप सबसे, ये जो कप रोलिंग कप मैडम लेके खड़ी है, ये अपने फादर इन लॉ के मेमोरी में यूपी स्टेट ब्रांच TNA को डेडिकेट करके देंगे। अभी हमको हैंड ओवर करेंगे, हम लेंगे आज से प्रेसिडेंट है, आपके सबके समक्ष विटनेस रहिएगा। और उसके साथ साथ जो स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा स्कोर पाने वाले बच्चे प्लस उनका कॉलेज या स्कूल, उनको ये जाएगा। 3 साल तक अगर वही एक ही स्कूल लेगा या कॉलेज लेगा तो उनके हो जाएंगे। जैसे पहले मैंने कहा, मेरा 2-3 वैसे बड़े बड़े शील्ड जा चुके हैं, एक आ गया, सर देने को वादा किया। सो इसको भी मैडम हैंड ओवर करेंगे, मैं रिसीव करती हूँ। प्लीज सबके अटेंशन चाहूंगी मैं। प्लीज सिस्टर 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, 2 मिनट मैं लूंगी। यहाँ इस समर्पण कॉलेज ऑफ नर्सिंग और समर्पण फैमिली का एक साइड न्यूज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी।
उनके प्रति, उनके आत्मा के प्रति हम लोग जो है 2 मिनट का मौन लेकर कंडोलेंस करेंगे। उसके लिए मैं चाहती हूँ, वो है मिस्टर योगेश पांडे, यहाँ के फाइनेंस ऑफिसर रहे, और ये समर्पण फैमिली के, ये 3:05 रात में, मॉर्निंग में उनकी डेथ हो गए। अभी जल्दी 1 हफ्ते में उनका कुछ CA चेस्ट का डायग्नोस हुआ था। सिर्फ 1 ही हफ्ते में, हो सकता पहले कोरोना वगैरह हुआ हो। अच्छा, कोरोना हुआ रहा उनको, 1 महीना हुआ, उस बीच इनका इंतकाल हो गया, या वो सडन डिमेज कहना चाहिए, हो गया। उनके आत्मा के लिए हम लोग 2 मिनट का मौन रखकर प्रार्थना करेंगे, साथ साथ उनके परिवारजनों को आश्वासन मिले। Please now continue the rest of the program. Next, moving toward the next felicitation part, I request Madam Mary J. Malik to felicitate our chairman sir by giving him a memento. Now I request Principal Ma'am to felicitate our President Ma'am, Mrs. Mary J. Malik, by giving her a memento. I request Ma'am again to felicitate Madam Bhumika Singh, Secretary SNI Advisor TNI UP, by giving her a memento.
Again, I request ma'am to felicitate a student, Secretary SNA UP State Branch UP, Ms. Srishti Yadav, to felicitate her. I request ma'am to felicitate Ms. Sonam Verma by giving her a memento. Vice President of SNA UP State Branch. Now I request Madam Bhumika. I am pleased to felicitate Principal Ma'am by giving her a memento. Once again, I request Bhumika Ma'am to felicitate Madam Colin V. Sumitra, Principal College of Nursing, CSCC, Lucknow, by giving her a memento. I request again Principal Ma'am to felicitate our special guest, Ma'am Rinku Lakra from OIT. So our chief guest, Dr. Alok Kumar, Principal Secretary, Uttar Pradesh, he will be joining us at the evening session virtually. Again, I am requested to felicitate our special guest, Mr. Neer Shajal, Brand Manager of Himalayan Group. So now I request Ms. Srishti Yadav, Secretary SNI UP State Branch, for a vote of thanks. Good afternoon. One and all present here. I, Srishti Yadav, being the student secretary of SNAI, I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. Let me first of all start by giving glory to Almighty God for making today's occasion a resounding success. As William Arthur Ward rightly said, feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it. Today, I take this opportunity to express my deepest sense of gratitude and appreciation to all those who made this event such a resounding success. To begin, on behalf of all the students, a special thanks to our chief guest, Dr. Alok Kumar, IAS, Principal Secretary of Uttar Pradesh. Sir, join with us virtually at evening. He is busy in schedule. And he is a reflection of commitment of the nursing profession. Thank you, sir, for allowing this event. Now, we are grateful to our guest of honor, Dr. Alok Kumar Srivastava, Secretary and Registrar of Uttar Pradesh Medical Faculty. Sir also joined with us virtually at evening. I thank him for his kindness, his interest, his hospitality, and Make your computer. Support. Thank you, sir. I thank our guest of honor, Lieutenant Colonel Varun Bajpayee, Executive Registrar of Sanjeev Gandhi Postgraduate Institute of Medical Science, for his stewardship, support, vision, and commitment. Thank you, sir, to allowing this event. I also express my special thanks to our guest of honor, Dr. R.S. Dubey, Chairman of Samarpan Institute of Nursing and Paramedical Science, who spared time with us from his busy schedule to grace this occasion. Thank you, sir. Now,
I place on record our gratitude to Mrs. Mary J. Malik ma'am, State SNA President of TNAI, Uttar Pradesh branch, for her generous support and guidance for this event. Thank you ma'am for your unrestricted support. I would like to thank Colonel Dr. V. Sugitha, Principal and Professor of College of Nursing Command Hospital, Central Command, Lucknow, the great personality who is present with us. Thank you ma'am. Now I would like to thank our well-wisher Ms. Bhumika Singh, Secretary and State SNA Advisor of TNAI, Uttar Pradesh branch, for her minute-to-minute guidance and support on every point of time for this great event. Thank you ma'am. A very presence of Mr. Neil Chachar, Brand Manager of Himalaya Group. Thank you, your gracious presence, sir. Now, a special thank you for Miss Rinku Lagra, OET Head Office of Delhi. Thank you, ma'am. And thanks to Dr. Deepti Shukla, Principal of Samarpan Institute of Nursing and Paramedical Science, for their great effort to organize such a great program. Thank you, ma'am. I must mention our deep sense of appreciation for the committee member of TNAI for their immense support for this program. Thank you all. I take this opportunity to extend sincere thanks to all our dignitaries and distinguished guests who have come from different destinations for their gracious presence in this event. Thank you all. I would like to thank to all the heads of various colleges for their valuable contribution, guidance and encouragement in all our efforts. Thank you all. I owe special gratitude to the non-teaching staff who worked hard to ensure that this occasion memorable success. Thank you. Last but not the least, I thank my all friends who gather here from various colleges for your enthusiasm, cooperation for making this event success. Thank you. Once again, I must express deep sense of appreciation to Samarpan Institute of Nursing and Paramedical Science for the valuable efforts to organizing the program. Finally, I leave you with this inspiring quotes by Martin Luther King: "An individual has not started living until he rises above the confines of his individualistic concern to the broader concern of all humanity." Once again, I thank you all for your attention. Thank you so much. All our faculties and guests, please be here for high tea, and all the students are requested to go in the bus for the lunch after the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे